Good morning, students. Welcome back to your online business study class. And today we will be discussing about the another retailing type of shop, and that is chain store or multiple shop. Now, as we have discussed in the previous video about the departmental store, which is one of the kind of retailing shop, and the another form is the chain store or multiple shop. Now, what is basically chain stores or multiple shop? These are basically a network of retailing shop which are owned and operated by manufacturer or intermediators. It means the chain store or multiple shops are those kind of retailing shops जिनको कौन ओन करता है और ऑपरेट करता है, या तो मैन्युफैक्चर इटसेल्फ और इंटरमीडिएटर्स. Right now, when we say about chain store or multiple kind of shop, so in this number of shops are there with a similar appearance are set up in a locality spread over the different part of the country. It basically say that similar arrangement होता है इसमें, और similar number of shops are there जिनका appearance कैसा होता है, एक जैसा होता है, और instead of सेटिंग अप दैट शॉप इन वन लोकेलिटीज़, हम एक ही शॉप्स के सिमिलर अपीयरेंस को हम क्या करते हैं, अलग अलग लोकेशन में सेटअप कर देते हैं. यानी एक जैसी शॉप्स जो होती हैं अलग अलग लोकेशन में सेटअप करना, और विच आर फंक्शनिंग इनटू अ सिमिलर वे, दैट इज कॉल्ड एज चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स. Now, when we talk about chain store or multiple shop, it also have one more feature, that they are basically dealing into a shop, normally dealing into a standardized product. राइट यानी यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में ये शॉप डील करती है, ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करती है, एंड विच हैव रैपिड सेल टर्नओवर. इट मीन जिनका सेल टर्नओवर कैसा होता है, रैपिडली होता है, इमीडिएटली जिनकी सेलिंग जो परचेजिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है. नाउ दीज शॉप्स आर रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑर्गेनाइजेशन इज देयर who used to set up the similar appearance of shop into different locations, and there is only one identical merchandise strategies, means there is only one strategies which is followed by all the shop. Right now, this was all about the chain store shop or multiple shop. Now this can be discussed with the certain features also, and the first feature of your chain store shop is that these are basically a shop जो कि लोकेटेड कहाँ पे होती हैं, एक ऐसे एरिया में लोकेटेड होती हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन या लोकेलिटीज़ ज़्यादा होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकें. नेक्स्ट से दैट द मैन्युफैक्चर प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ऑल द रिटेलिंग यूनिट इज सेंट्रलाइज एट द हेड ऑफिस फ्रॉम वे द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू ईच ऑफ दीज शॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. इट मीन्स इस शॉप्स में क्या होता है, मल्टीपल शॉप में देयर इज़ वन हेड ऑफिस. इन सारे शॉप्स का एक हेड ऑफिस होता है, और वो हेड ऑफिस इन शॉप्स को एक सिमिलर अपीयरेंस में अलग अलग लोकेशन में सेटअप कर देता है. राइट नाउ द सेंट्रलाइज पॉलिसी इज डन फ्रॉम अ हेड ऑफिस. यानी हेड ऑफिस क्या होता है, एक सेंटर के तौर पे काम करता है, making all the rules regulations for all the branch shops, that is going to be decided from the central shop only or central head office only. Now when we say about the goods, how the goods are reached to a different multi shops, right? So the first thing will be the head office will purchase good for all the different shops which are available, and then these goods will be dispatched from head office to the branch shops according to the requirement has been set by them. So what is basically happening, the policy of purchasing product here in these multiple shops are following a centralized policy. It means परचेजिंग जो हो रही है प्रोडक्ट की, वो हर शॉप अपने लिए सेपरेटली नहीं कर रही है, बल्कि एक ही कर रहा है, दैट इज़ हेड ऑफिस. इसलिए पॉलिसी कहलाती है आपकी सेंट्रलाइज पॉलिसी. नाउ बिकॉज what is happening, the centralized policy की वजह से there is head department or head office which is going to purchase product for the different branch office according to their requirement and department. So the cost of operations are going to be reduced. We are going to save money here. Why? Because here the head office will purchase the product or goods in a large quantity, in a bulk quantity, and definitely in that manner what will happen, the cost of the product will get reduced. Now next feature say that when we say about these kind of shop, these are basically under the supervision of branch manager. Right, it means ये जितनी भी multiple shops होती हैं, every shop has a manager which is called as a branch manager. Right, he is one who is responsible for conducting day to day management of that shop, and he need to send out the daily report to the head office. It means
जो उस पर्टिकुलर शॉप का मैनेजर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रांच मैनेजर, जो कि उस शॉप्स के डेली ऑपरेशंस को कंडक्ट कराएगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसकी डेली रिपोर्ट वो कहाँ सेंड करेगा, हेड ऑफिस को सेंड करेगा. नाउ इन डेली रिपोर्ट दे नीड टू मेंशन द कैश विच हैज़ बीन डिपॉजिटेड इनटू द शॉप, यानी जो रेवेन्यूज आपको सोल्ड करने के बाद में जनरेट हुआ है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉक्स. नेक्स्ट इज दैट ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस. Now it means that the different shops which are available or which are set up as a branch shop, they are going to be controlled by the head office, and they are going to follow only on those policies which are going to be made from the head office. It means branch office cannot make their own policies for regulating the functions of every branch. There will be one head office only which is going to regulate, which is going to make the policies and rules and regulation and code of conduct for the different branches. Now the prices of goods in such shops are fixed and all sell are made on cash basis. This is a very important feature of multi-store shops, that the goods prices are declared by the head office. So no matter how many branches shops are there, kitni shops hain branch ki, but the prices of all the branch shops are going to be similar, because these prices are decided from the head office. They have a policy of unique or uniformity prices, right? And now when we say about the selling also, they does not provide any kind of credit facility. Multi shop we have to go through with the cash payment only. Next is the head office normally appoint inspector who are concerned with the day-to-day supervision of shops. It means the head office also have appointed certain people whose work is to go through immediately to check, to supervise that how the work in the branches office are going on. Now this was all about the different features a multiple shop have. Now let's see what are the different advantage a multiple shops are giving. So the first advantage, as we have already done, that they are going to follow a centralized policy, right? So because of following the centralized policy, what is going to happen? There will be economy of scale. Economy of scale कैसे आएगा? Because the purchasing of product for the different department or different branches are going to be done from the head office only. So these purchasing they are going to do in a large manner, in a bulk manner. वहाँ पे क्या होने वाला है? Whenever we purchase anything in a bulk manner, so the cost of the particular or per unit of the product will get reduced. So because of this there will be economy of scale, यानी business में आपकी economy आएगी, expenditures आपके less होंगे. Next is elimination of middlemen. Elimination of middlemen basically say that these kind of shop means multiple जो shop होती है वो directly किस में deal करती हैं? Consumer के साथ में deal करती हैं. It means directly वो goods बेच रही हैं consumer को. So there are no middlemen there, no intermediaries there, no agent over there, right? It means seller directly goods किसको sold कर रहा है? Consumer को. So just because of this, what is happening? The unnecessary increment of prices are not there. Next is no bad debt. Very easy, because we have done in the feature that there is no credit facility available into the multiple shop. मल्टीपल शॉप में क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट की कोई पॉलिसी नहीं होती. इफ एनीबडी वांट टू परचेज द प्रोडक्ट दे हैव टू गो थ्रू विद द इमीडिएट पेमेंट. सो इफ देयर विल बी नो क्रेडिट फैसिलिटी देयर विल बी नो चांसेस ऑफ अराइजिंग बैड डेब्ट्स ऑल्सो. Next is transfer of good. Now the goods not be in demand in particular locality may be transferred to another locality. Now what is basically happening in the multi shop? Because these shops belong to one shopkeeper only, one manufacturers only, one intermediator only, जो कि क्या करता है अपनी shops को अलग अलग location में खोल देता है और similar appearance के साथ में, right? So just because of this, what is happening in case there is one particular location where a branch shop is not working properly, because the demand of that local areas or locality peoples is not more. So what can be done? Easily the head office can take a decision of shifting the material or the product of that branch shop which is not sold to the another shop where the demand is more. Diffusion of risk. Now there are a very less chances of risk in these kind of shop, because in case there is any branch shop which is going into a loss manner, कोई ऐसी शॉप जो कि लॉस में चल रही है जहाँ पे डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, सो उसके लॉस को हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? दूसरे ब्रांच शॉप से कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लो कॉस्ट. नाउ बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग, क्योंकि हम लोग परचेजिंग कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट की, वी हैव इफ सपोज वी हैव 10 शॉप
अगर आपके एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर आपने 10 ब्रांच शॉप्स खोल रखी है सिमिलर अपीयरेंस के, सिमिलर प्रोडक्ट के, सिमिलर प्राइसेस के. नाउ हु इज गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर ऑल दीज ब्रांच शॉप्स? इट इज अ हेड ऑफिस. नाउ हेड ऑफिस इज फॉलोइंग purchasing product for each and every branch shop. Now what is going to happen? They are eliminating the middleman. यानी middleman जो intermediators होता है, engage होता है एक seller और purchaser के बीच में, जिसकी वजह से prices increase हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट के, उसको हम eliminate कर रहे हैं, remove कर रहे हैं, राइट. इसकी वजह से क्या हो गया है, जो कॉस्ट बहती है प्रोडक्ट की वो कैसी होती है, लो हो जाती है. Flexibility. Now this is also called or this also has a advantage of flexibility, as a shop which is not operating at profit, easily it is a choice or easily it is a decision of a head office that anytime they can either shift the location of that shop or they can shut down the shop. So that is the reason this shop has a flexibility of either shifting from one place to another place or even shutting down also, according to the choice of head office. Now there are certain disadvantage and limitations also which multi shop basically followed, and that is limited selection of goods. When we say about multi shop, they are basically dealing into a limited range of product, right. They does not deal into a different kind of products. So in case a consumer is there who required a variety of product, so in that case this multi shops are not preferable by certain consumers. Next is lack of initiative. Lack of initiative basically say because all the rules, regulation and policy are going to be declared from the head office. It is head office who is going to make the thing that how work will be done, how things will be operated into different branch office. So there might be a chances where the people who are working into the branch office, they are not able to give their advices, they are not able to do work according to their own manner. So because of which what is happening, the creative skills of the people are completely avoided here. Next is lack of personal touch. Why lack of personal touch? Because lack of initiative in the employee sometimes lead to indifferences and lack of personal touch in them, right. It means because the branch office and the head office, two things are there, but the head office is just making rules and regulations and which is supposed to be followed from the branch shops, right. So what is going to happen because of this, they are removing the initiative also. It means जो उनकी क्रिएटिविटी होती है ब्रांच ऑफिस की अपने काम को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, वो उनके पास में हम वो फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं. दे नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस ओनली, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू शो आउट द इनिशिएटिव. वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, अपनी कोई क्रिएटिविटी शो नहीं कर पा रहे किसी काम को और बेटर करने के लिए, और उसकी वजह से अ लैक ऑफ पर्सनल टच इज ऑलवेज देयर बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड द हेड ऑफिस. Difficult to change demand. This basically say that if a demand of a product get changed, and because multiple shop we used to follow the policy of centralized policy means head office, a center one, that is the head office, which is going to purchase the product into a very bulk manner or into a large manner for all the different shops which are available as a branch shops. So in case suddenly the product demand has get changed, और अगर सपोज़ इतना बल्क में प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद में सडनली मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो गई है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट केस? देन द मल्टीपल शॉप्स आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस, क्योंकि उनके पास में जो गुड्स होता है अवेलेबल वो कैसा होता है, बल्क में होता है, लार्जर क्वान्टिटीज़ में होता है. Now this was about the multiple shop. Let's see the difference between the departmental stores and multiple shop. Now first is location. लोकेशन के बेस में अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें, सो डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ लोकेट होता है, सेंटर प्लेस ऑफ द सिटी, यानी वी कॉल एज द हार्ट प्लेस ऑफ द सिटी, राइट, जहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हम क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें. जबकि मल्टीपल स्टोर्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्टोर्स हमारे लोकेटेड होते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस में, जो कि लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर को अप्रोच तो करते हैं बट दे डज नॉट हैव अ लोकेशन ऑफ सेंटर. नाउ नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट. व्हेन वी से अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इनमें जो प्रोडक्ट की रेंज होती है, what is happening there, because departmental stores not only provide the product, they also provide lots of another kind of services to the customer for satisfying their need. But the important thing is within one roof only, यानी एक ही छत के नीचे वो कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, बल्कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, right. Now they have to carry a variety of product
And however, the multiple store generally aim to satisfy the requirement of customer relating to a specified range of their product. It means जो range of product होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वो variety of product होती है. आपको हर तरह के प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगे. बट when we say about a multiple shop, they basically work into a specified range of product. यानी एक particular product पे ही वो काम करते हैं. Next is services offer. Departmental stores, as in the introduction of this we have done that there are a lot of services which are offered from the departmental store because they give more important to providing maximum services to the customer, right? But in case of multiple shop provide very limited services, and that also confined to providing guarantees, giving a repairing card once the good is sold if the good is find it defective. ये extra services नहीं provide कराती. Next is pricing. The multiple shop chain sell good at fixed price and maintain uniform pricing policy for all the shop because multiple shop chain किसके अंदर काम कर रही है, एक हेड ऑफिस के अंदर काम कर रही है, राइट. नाउ इन शॉप्स में क्या होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं फिक्स वो हेड ऑफिस करता है और इन सब में जो प्राइजेस होते हैं यूनिफॉर्म मैनर में होते हैं, राइट. इनकी पॉलिसी होती है कि भले ही इनकी जो शॉप्स हैं वो अलग अलग लोकेशन में, पर इनकी शॉप्स में प्राइजेस कैसे होंगे, प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट के सिमिलर ही प्राइजेस होंगे. But in case of departmental store, they does not have uniform pricing policy for the department. It means the different department, according to the occasion, according to their own department discount, they can have a different product prices for in a variety manner. Class of customer. Now when we say about departmental store, because it is providing more services, so what happened basically over there, the prices of product get increased. यानी अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ खरीदते हैं, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग लाइक कूपन्स, showing the restroom, bathing room was there, then restaurant is there inside the departmental store only. So इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट के प्राइजेस होते हैं वो हमारे हाई हो जाते हैं. सो ये बेसिकली किस क्लास के लोगों को कैटर करता है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग टू इन पीपल हुज इनकम इज मोर. बट इन केस ऑफ मल्टीपल शॉप्स, because they are not going through lot kind of different kind of services, so what happened, the prices of products are reduced less, so they also include lower income group also. Credit facility. Now in case of multiple shops, it is a strict policy from the head office that all the product will be sold into a cash manner only. There is no credit facility, right? And because of this we get advantage also that there is no need and there is no chances of arising of debt. But in case of departmental store, they provide certain time a credit facility to those customer who are their regular customer. Now flexibility. Now departmental store is dealing in a wide variety of product, so they have certain flexibility in respect of line of goods marketed. Suppose a product has been demanded now, the demand of a particular product is very high, after some time the demand of a product get decrease, so departmental store is not going to face any problem because they are easily able to shift the product from one variety to another variety. There are a lot of wide variety of product available with them. But in case of multiple shops, they are not having much scope, and so that they are not able to be having much flexibility also, because mostly they are dealing with a one line of product only. So this was all about departmental stores, difference between the departmental store and multi-shop. Now the another form of your retailing trade, children, we have that is called as mail order houses. Now mail order houses is also a retail outlets and that sell the merchandise through mail, right? It means here for the purpose of selling goods and merchandise we are using post office or we are using mail, so that whole process will be called as mail order houses. यानी जहाँ पे आपको goods को sold करने के लिए या goods को exchange करने के लिए आप post office यूज़ करते हैं या मेल फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे मेल ऑर्डर हाउसेस. और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिटेलिंग आउटलेट, राइट. नाउ लेट्स सी क्या है मेल ऑर्डर हाउसेज इन डीप. सो व्हेन वी से अबाउट मेल ऑर्डर हाउसेज, जनरली देयर इज नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर in this type of trading. Why? Because the goods are going to be transferred from seller to buyer. The order is going to be given from buyer to seller as a form of mail only by using the post office. So that is the reason there is no direct or personal touch between the buyer and the seller. Now how the things work for the mail order houses. Mail order houses में एक exchange process करती होती कैसी है. So for this, first
what the seller need to do? A seller who want to sold their goods by using mail order houses, they have to go through with, or they have to approach to the potential customer by showing advertisement of their goods. यानी जिस goods को उसको sold करना है, पहले वो customer तक उस goods की information पहुंचाएगा advertisement के through, और एज अ फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, एज अ फॉर्म ऑफ मैगजीन, या फिर सर्कुलर, कैटलॉग, सैम्पल्स या बिल, और कुछ और तरीके से, राइट, जिसके थ्रू की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर तक पहुंचा सकें. वंस दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू द कस्टमर, now in case the customer is interested in that product, the customer will send a mail of about a particular product whose information he want to know deeply, right? So after getting that mail from the customer, what the seller is going to do? The seller is going to send all the relevant information about the product which a customer is demanding and which a customer is asking, like the price of that product, features of that product, the delivery term, how the product will be delivered, and what will be the term or mode of payment, यानी payment किस mode से होगी. And then on receiving the orders, once the seller will receive the order, then he will check it properly according to the specification which has been made from the customer side, and then these goods will be sold to whom? These goods will be sold to the customer by the help of post office. It will be transported to the customer deliver address, right? Now when we talk about the payment or mode of payment system in your mail order houses, so there are three mode of payment system there. The first is called as that the customer may be asked to make full payment in advance. यानी एक पहला पेमेंट मोड क्या होता है कि कस्टमर जब ऑर्डर भेज रहा है तभी फुल अमाउंट वो एडवांस में पे कर ले बाय हेल्पिंग द पोस्ट ऑफिस ओनली or mail facility only. The second is by using VPP. VPP basically say that goods we can send by value payable post, right? And under this arrangement, the goods are sent to the post and delivered to the customer only on making full payment for the same. यानी यहाँ पे सेलर सेकंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? सेलर वीपीपी फैसिलिटी को यूज़ करेगा और गुड्स को जो डिमांड कर रखे हैं कस्टमर ने उसे पोस्ट ऑफिस में भेज देगा, नियर पोस्ट ऑफिस टू द कस्टमर रेजिडेंट, यानी कस्टमर के घर के आसपास के पोस्ट ऑफिस में भेजेगा वीपीपी फैसिलिटी के थ्रू. और वंस कस्टमर विल पे द होल अमाउंट कैश टू द पोस्ट ऑफिस, then only the post office will deliver goods to the customer or hand over goods to the customer. This is the second mode of payment here. Now in the third mode of payment, what basically happened, जो goods होते हैं वो sent होते हैं बैंक के through, right? बैंक के पास पहुंचते हैं पहले and then it is delivered to the customer once the customer will pay out a full amount to the bank. So what is basically happening here, because all the three mode of payment into mail order houses are cash basis only, there is no credit facility here, so there is no chances of arising bad debts and there is no chances of having any kind of risk into a default of payment, right? Now according to these, if we say about mail order houses, it has certain drawbacks also, that because mail order houses we are using post office for the purpose of exchanging the goods, right? So we cannot use those kind of goods which are having perishable in nature और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू. यू कैन नॉट एबल टू ट्रांसफ़र अ लार्ज बल्की क्वांटिटी ऑफ मशीनरी, एक ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे एसेट्स जिनका कि वेट बहुत ज़्यादा होता है, हम उन्हें मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू ट्रांसफ़र और मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द disadvantage of mail order houses, that it cannot be used for each and every kind of product, right? Now it has certain goods also. हम किस तरह के गुड्स के लिए मेल ऑर्डर हाउस को यूज़ कर सकते हैं? जो ग्रेडेड गुड्स होते हैं, यानी ग्रेडेड मतलब जो क्लासिफाइड गुड्स होते हैं, ग्रुपिंग होती है, उनकी क्लासिफिकेशन रहता है. स्टैंडर्डाइज गुड्स जो हमारे होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है. या फिर ऐसे गुड्स जिनके की मार्केट में डिमांड ऑलरेडी आ रखी है, राइट, ताकि आप उन्हें सोल्ड करो, ट्रांसपोर्ट करो, तुरंत इमीडिएटली वो क्या हो जाएं, सोल्ड हो जाएं. या फिर ऐसे गुड्स वेयर देर इज़ नो शॉर्टेज इन द होल ईयर, यानी जिन गुड्स की कभी भी क्या नहीं होती है, शॉर्टेज नहीं होती है. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि ऐसे गुड्स को कंज्यूमर जो मंगवाता है वो कैसे मंगाता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में परचेज़ करता है ना. या फिर ऐसे गुड्स वेयर देर इज़ अ लीस्ट पॉसिबल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, यानी जिसका कॉम्पिटिशन मार्केट में कैसा हो, बहुत कम कॉम्पिटिशन हो. और ऐसे गुड्स
विच कैन बी ईजिली डिस्क्राइब बाई पिक्चर्स, यानी ताकि जब हम ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू से डिस्क्राइब कर सके कस्टमर कि उसे किस तरह का गुड चाहिए. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स विच वी कैन वर्क और विच वी कैन एबल टू सेंड बाय द हेल्प ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज. नाउ लेट्स सी द एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज. द फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ मेल ऑर्डर बिजनेस में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग पोस्ट ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, राइट. सो वी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग फॉर दैट, वी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स फैसिलिटी फॉर दैट. तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, लेस होता है, स्पेशली द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. Next is elimination of middlemen. As I have already told you, it is very basically what is going to happen. Seller से directly कहाँ जा रहा है goods, post office के through consumer के पास में जा रहा है. So there is no interpreters here, there is no middleman here, no agent here, because of which what is going to happen, the product prices are not going to be increased. Absence of bad debts, because all the three mode of payment which we are using into mail order houses are कैश मैनर ओनली. सो कैश मैनर में है, क्रेडिट फैसिलिटी आपने अवेलेबल नहीं कराई है तो आपके रिस्क नहीं अराइज हो सकते हैं क्योंकि बैड डेप्ट्स नहीं होंगे आपके. वाइड रीच. नाउ बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस यू कैन सेंड योर गुड्स टू एनी लोकेशन इन योर कंट्री, राइट. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, वी विल बी एबल टू रीच इन टू अ वाइडर लोकेशन. Next is convenience. This is called as convenience form of retailing outlet, and the reason behind this is that the goods are reaching to the doorstep of a customer. Now this was all about the different advantage of mail order house, and now we will be going through with certain disadvantage and limitation also which mail order houses face. Now these are the different limitation of mail order houses. First is lack of personal contact. This basically say that because the goods are not going to be sold directly from seller to consumer, seller इसको personally consumer को नहीं sold करता है शॉप में. बेसिकली गुड्स क्या हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, किसको, कंज्यूमर को. सो यहाँ पे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बायर और सेलर के बीच में. एंड बिकॉज ऑफ दिस देर आर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट बिटवीन each other. Next is high promotion cost. Now for the post office, when we want to sell our goods by the help of mail order houses, we need to first promote our good into a larger manner. And if you are going to promote your good into a larger manner, you will require more promotion cost, जिसका रिजल्ट कहाँ पे होता है, हेवी एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं आपके प्रमोशंस में. और वो हैवी एक्सपेंडिचर्स एक प्रोड्यूसर या फिर सेलर कहाँ से कवर करता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को हाई करके. नो आफ्टर सेल सर्विसेज. This is also one of the disadvantage of your mail order houses, that there is no after sale services are provided, because there is no personal contact. Once the product has been sold, once the product has been transported from the seller side to consumer side, consumer has received that product and did the payment. After that there is no another services which will be provided from the seller side. No credit facility. So basically the mail order houses does not give any credit facility, we need to pay out immediately, right. Next is delayed delivery. Now mail order houses completely depending on their work for from the post office side. In case there is any issue with the post office, the delivery of goods will take time. Possibility of abuse. This basically say that there is a greater possibility of abuse or dishonest trader. This basically say that it might be possible that the consumer has demanded for a separate good, but the seller has sold a different kind of good and sent a different kind of good. High dependency on postal services. Mail order houses are completely dependent on the postal services. So in case the postal services are not working efficiently, and especially our country, a vast country, right, so in that kind the business is going to be affected here. So this was all about mail order houses. The another form of your retailing outlet is consumer cooperative store. But children, we have already discussed this consumer cooperative stores in your chapter number 3 or 2, so we are not going to discuss this again. Now let's come with another topic, and that was your supermarket, which we will be taking into our another videos.